नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं देवश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी आसियान फुडाऱ्यांनी जोडपणान आसियान भारत संबंदां मदल्या प्रगतीचो आढावो घेतलो आनी व्यापक धोरणात्मक भागीदारी मजबूत करपाच्या उपक्रमार चर्चा केली. आपल्या उलोवपांत मोदी हांणी आसियान एकता, आसियान केंद्रीकरण आनी इंडो पॅसिफीक वेल्या आसियान दृश्टिकोनाक भारताचो तेंको आसपाचो पुनरुच्चार केलो. आसियान कम्युनिटी विजन 2045 स्वीकारल्या बद्दल तांणी आसियानाचें कौतुक केलें. तांणी आसियान भारत व्यापक धोरणात्मक भागीदारी 2026-2030 अंमलात हाडपाक आसियान भारत कृती आराखड्यांत अंमलबजावणी खातीर विस्तारीत तेंको जाहीर केलो. सुरक्षीत दर्या वातावरणा खातीर तांणी दुसरी आसियान भारत संरक्षण मंत्र्यांची बसका आनी दुसरी आसियान भारत दर्या सराव आयोजीत करपाचोय प्रस्ताव मांडलो. भारतीय सैन्य आयज 79वो इन्फंट्री दीस मनयता. हो दीस स्वतंत्र भारतांतल्या पयल्या लश्करी घटनेची याद म्हूण मनयतात, जेन्ना भारतीय सैन्यान 27 ऑक्टोबर 1947 काश्मीर देगणांत भारतीय भुंयेर जाल्ल्या पयल्या हल्ल्याक धांवडायले. राष्ट्राच्या सार्वभौमत्वाक आनी प्रादेशीक अखंडतेक निर्माण जाल्ल्या धोक्याक प्रतिसाद म्हणून भारतीय सैन्याचे मुखेल पंगड श्रीनगरांत हवाई मार्गान देंवले. पायदळाचे महासंचालक लेफ्टनंट जनरल अजय कुमार हांणी सगळ्या माजी सैनीक आनी सेवारत पायदळ सैनिकांक ह्या दिसाच्यो हार्दिक शुभेच्छा दिल्यो आनी तांच्या अटल धैर्य, वेवसायिकता आनी कर्तव्या प्रती दृढ समर्पणाचें कौतुक केलें. This day, the nation pays tribute to the supreme sacrifices made by the brave hearts of infantry, whose valor and dedication continue to safeguard our freedom and sovereignty. We remain grateful to the families of those heroes for their resilience and strength. I convey my best wishes to all ranks of infantry on this proud occasion and wish them continued success in their future endeavors in service to our great nation. केंद्रीय गृहमंत्री आनी सहकार मंत्री अमित शाह हांणी आयज मुंबयत इंडिया मॅरीटायम सप्तकाचें उक्तावण केलें. ह्या वेळार उलयतना शाह हांणी म्हळें की भारताचो दर्या दृश्टिकोन सुरक्षितता, स्थिरता आनी आत्मनिर्भरतेर आदारीत आसा. हालींच्या काळांत केल्ल्या व्यापक संरचनात्मक सुदारणांनी भारत एक मजबूत दर्या शक्त म्हणून उदेता. ह्या मेळाव्यांत उलयतना केंद्रीय बंदर, जहाज बांदणी आनी उदका मार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल हांणी म्हळें की इंडिया मॅरीटायम वीक हो जगांतलो सगळ्यांत प्रमुख दर्या मेळाव्या पैकी एक जाला, जातूंत 85 देश, 500 परस अधिक प्रदर्शक आनी 40 व्यासपीठांचो सहभाग आसा. दुनिया में शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री में टॉप 5 में भारत होगा. नए मेगा और डीप ड्राफ्ट पोर्ट्स का निर्माण हम कर रहे हैं. पोर्ट हैंडलिंग में 10,000 मिलियन मैट्रिक टन प्रति वर्ष का हमने लक्ष्य रखा है. पोर्ट ट्रांसपोर्ट को पूरी तरह से डिजिटाइज कर लिया गया है और इसके साथ ही भारत इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर, नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जैसे कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट से भी अब जुड़ चुका है. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी आज देशाच्या संरक्षण उत्पादनात खाजगी क्षेत्राच्या वाडट्या सहभागार उजवाड घालो आनी सांगलें की भारताची संरक्षण निर्यात आतां विक्रमी 23,500 कोटी रुपया मेरेन पावल्या. नवी दिल्लीत जाल्ल्या SIDM वार्षिक परिशदेंत उलयतना मंत्र्यांनी अधोरेखीत केलें की फाटल्या दशकांत देशाचें देशांतर्गत संरक्षण उत्पादन 1.5 लाख कोटी रुपया परस चड विक्रमी उत्पादन जालां आनी खाजगी क्षेत्रा कडच्यान 33,000 कोटी रुपया परस चड रक्कम मेळटा. ऑपरेशन सिंदुराच्या यशाचें कौतुक करतना मंत्र्यांनी उद्योग झुजाऱ्यांची नाविन्यपूर्णता, डिझायन आनी उत्पादन ह्या क्षेत्रांत अथक परिश्रम केल्ल्या बद्दल कौतुक केलें. सिंग हांणी लश्कर, नौदळ आनी हवाई दळा सयत खुबशा धोरणात्मक समजिकायेच्या कबलाती वरवीं उद्योग आनी सशस्त्र दळां मदीं महत्वपूर्ण सहकार्य स्थापित केल्ल्या बद्दल SIDMचें कौतुक केलें. अटैक के बाद जिस तरह से हमने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया है, उसके बाद ये स्थितियां कुछ ऐसी बनी थी कि युद्ध हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा था. हालांकि हमारी सेनाएं किसी भी स्थिति में अपनी सीमाओं की सुरक्षा करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं, लेकिन मैं बस ये कहना चाहता हूं कि दुनिया में पीस और लॉ एंड ऑर्डर में अनसर्टेनिटी तो बढ़ ही गई. हमें हर डोमेन को सावधानी से एनालाइज करते हुए अपने स्टेप्स उठाने होंगे. भारतीय हवामान विभागान आज आंध्र प्रदेश, पूर्व राजस्थान, गुजरात, केरळ, माहे, कोकण, गोवा, ओडिशा, रायलसीमा, तमिळनाडू, पुडुचेरी, करैकल आनी कर्नाटकाच्या दर्या भागांत घोग्यांनी ते अतिघोग्यांनी पावस पडपाचो अंदाज दिला. काल बहरेनात जाल्ल्या आशियाई युवक खेळांत भारतीय लिफ्टर प्रीती स्मिता भोईन
नवीन युवा वर्ल्ड विक्रम स्थापन केलो. चलयांच्या 44 किलो स्पर्धेत वांटो घेवन तिणें क्लीन अँड जर्कांत 92 किलो वजन यशस्वीपणान उखल्लें. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राचे मुखावेले राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटलें फाल्यां सकाळीं 8:40 नमस्कार.